Can I start? Yes, sure. Yes, Ritu, go ahead. A happy evening to all my fellow classmates and our beloved teachers. I welcome all of you to this Saturday's activity, which is a debate on population explosion, boosting the economy or lowering the strength. I'm Ritu Govin and I'll be your host for this activity. Today we are having brilliant students who will debate in this activity and share their views about the given topic and bring out their hidden aptitude. So, before we start, let me read out the rules and regulations of this particular activity. Speeches shall not be less than 2 minutes and not more than 5 minutes in length. Each speaker is questioned as soon as they conclude their constructive speech. The witness must answer without consulting their fellow classmates. Statements must be constructed properly. Statements must not be constructed as slanderous, embarrassing, or discriminatory in this competition. India faces a number of problems, and the most pressing one would definitely be the population explosion. As we, as we now know that our India is the most populous country in the world, how would the population explosion affect our economy? Now I see all the participants are ready to come on and share their views about this given topic. So, who's going to break the ice? My dear friends, put your hands together for our first speaker, Miss Shreya. Good evening. I'm Shreya Mandal. I am to speak for the topic, which is how population booms the economic growth. I would like to start with the quote of Esther Bosserup, a Danish economist. She commented, "The power of ingenuity always matches the demand." She explained that with the population growth, the demand also increases, and hence the supply will always follow the demand, which will lead to economic growth. She also said that the population growth is an independent of food supply, and population increase is cause of change in agriculture. After the World War II, global population has more than doubled, and the world GDP per capita has increased more than 5%. With the development of technology, the population growth has become a boom rather than a liability. If we see the working population of India, the working population in service sector and agriculture sector has subsequently increased in the near 15 to 17 years, thus giving India an advantage of high economic development. As we see that the age group is divided into three categories. The children who are below 15 years, the working age group who are 15 to 64 years, and the elderly who are 64 years. In a recent study by World Population Prospectus 2022, it has been shown that more than 65% of India's population is the working capital. And even though the population of India is more, the population growth ratio is 0.98%, which is 12th in the world. I would like to conclude my statement that even though the population boom is there, it helps in growing of economy, and it helps in bringing more innovative mind, bringing more diverse culture and people. Thank you.
Thank you for sharing your precious thoughts amongst us, Shreya. Now, now please put your hands together for our next participant, Mr. Sovik. Good evening, respected judges, my worthy opponents, and the audience. Myself, Sovik Lohar, as I am hereby against the motion, and my point is demand pull inflation. As you all know that the excess demand put upward pressure on goods and services, which leads to a ultimately leads to an increase in the inflation. So the per capita income of the peoples of the India is not good, so that they can survive in the inflation. And my second point is the disturbance in emergency situation. Cities with a highly population density frequently have a traffic problem, so that it was very hard to access the emergency situations like ambulance and the fare cars, etc., which leads to a horrific situations. And my third point is the main point. Uh, More infrastructure and the building and the household leads to the destruction of forest or deforestation. Then it will cause a negative impact on the biodiversity, increase unemployment, rich and get a richer and poor due to lack of facilities. So increasing population has more demerits than the decreasing. Higher population will lead to a greater pollution levels in the airs and the waters, and a great consumption of the non-renewable resources leads to a faster depletion of the natural resources. Low quality of the life. Most of the people of our country was very per capita income was very low. So country rapidly expanding population. According to Human Development Report, a lack of economic security due to the number of the people without access to health care and clean water. So my conclude is that if population will decrease, so we can get a faster and better life and quality life. Thank you. So, if anyone has questions, they can ask. Shreya, do you have any questions? Yes, I have. Okay, go ahead. Well, Souvik, you said well. I would like to ask you a question. कि तुमने बोला था increase in population leads to lack of like job opportunities, right? तो मैं बोल रही हूँ that increase in population अभी जो GDP हम लोग देख रहे हैं कि GDP बढ़ रहा है, working इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है लोगों का, तो तुम कुछ प्रूफ कर सकते हो कि ये इस जो तुमने बोला सही है विद एनी Obviously. डेटा? सो देखो, इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मैक्स पीपल्स आर वेरी पुअर. इफ यू फाइंड द रेशियो. कैन यू elaborate? आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इफ यूड लाइक टू एलाबरेट. Like Indian GDP was not up to the marks. Like China, it was not like them. They are growing faster, and our GDP In was not China, up to like China. in China the population is more, then the GDP is also more. Then how can you conclude that the population is affecting the GDP? The population India is is more over there also. underdeveloping. Yeah. Huh? India is underdeveloping, not a developed country. So in our country, there are maximum numbers of poor you can find it. Then your point is also not bringing the answer to my question, isn't it? I want to say something. ओके, सो उत्सव, आपका क्वेश्चन क्या है? जैसा कि श्रेया ने बोला कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं कर रही, और चाइना की जीडीपी जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ग्रोथ कर रही है. तो श्रेया, मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की जीडीपी जो है उनके लैंडमार्क के हिसाब से होती है, जबकि चाइना की जो जीडीपी है उनके पॉपुलेशन के साथ साथ उनके पास हमसे ज्यादा लैंडमार्क है, देन उनके पास रिसोर्सेज भी हमसे ज्यादा है. सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी उनके पॉपुलेशन के साथ साथ उनके नेचुरल रिसोर्सेज
एंड उनके लैंडमार्क के ऊपर निर्भर करती है। Okay. Shreya, can you please turn on your camera? Uh, and my camera is doing some problem. Wait, just. There are many disadvantages of populations, and the first is unemployment. If a country has a big population, then they are never, तो वो किसी भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार नहीं दे सकते हैं, वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, तो जरूरी है कि उनके पास उस हिसाब से रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की कंपनियां होती है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, या फिर उनके पास लैंड ज्यादा हो ताकि लोग एग्रीकल्चर करके भी ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सके। तो जो कि अगर इंडिया के पास देखा जाए तो इसके पास जनसंख्या चाइना से थोड़ी सी ही कम है, बट हमारे पास लैंडमार्क उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। सो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे लैंडमार्क और पॉपुलेशन में इक्वलिटी नहीं होने के कारण होती है। थैंक यू। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Yunita, you can ask your question. Okay, so Souvik has, as you earlier mentioned, कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एंड डिफॉरेस्टेशन करना हो रहा है घर बनाने के लिए। सो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी तो है, जैसे कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करना और अपार्टमेंट्स में रहना। और आई थिंक ये सब सॉल्यूशन बहुत अच्छे से इम्प्लाई हो रहे हैं हमारे कंट्री में। सो आई डोंट थिंक इट इज अ वैलिड बट नॉट एट दैट एक्सटेंट। डू यू वांट टू मेंशन समथिंग मोर ऑन इट? हो रही है, लेकिन उतना भी तो नहीं हो रहा है ना, जितना आप बोल रहे हैं ना कि हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? कुछ ही पार्ट्स में इंडिया में हो रहा है बस। आई कैंट कैन आई सी टेल दैट यू समथिंग नीता? आई कैंट सी दैट देयर वाज ए मोर कि हो रहा है कहीं और भी, सिर्फ लिमिटेड लिमिटेड सिटीज पे हो रही है। Yeah, as it is a developing country now. यूनिता, कैन आई से यू Unita, should समथिंग? I answer? Excuse me guys, काउंटर क्वेश्चंस सबके स्पीच के बाद ओपन हाउस में कर लेना। अभी आई एम रिक्वेस्टिंग यूनिता टू गिव हर स्पीच। Okay, so very cheerful good morning to everyone. Myself Vinita Soni and I am from Dhamtri, Chhattisgarh, and I am going to take a side here, take the positive aspect here to that is the population actually boosts and strengthens the economic growth. So let's discuss how with the I want to raise a question that will a country with thousands of people are able to produce more goods and services than a country having a population of 10 lakh people? Obviously no, right? A country Unita, we're not able to hear you. Is there a network problem? Hello, Ritu, am I visible or inaudible? हाँ यूनिता, Sorry, continue. I think there's some network issue. Okay, so continue. Okay, so a country has a large population will have the potential to increase the production and GDP. Here's a very great quotation that necessity is the mother of invention. So let's stick to this quotation and try to understand the more aspects of the population explosion, which helps to the boost and strengthens the economic
growth. According to Cambridge University Research 1999 in Nigeria, earlier the farmer was earlier the farmer used to practice the slash and burn agriculture, okay, which uh, which we also, I think everybody knows that slash and burn agriculture is a traditional kind of agriculture which where after a harvesting, the weeds and the residuals used to be burned, and then after that that land become unfertile. So after the sudden explosion, population explosion in Nigeria, the farmer were forced to take care of their lands and adopt the technological aspects to uh, to increase the food production and to increase the food production and feed the people. So in from this abstract, we can conclude that by population explosion, the demand increases, and by increasing the demands, the human tends to uh, search and research on some solution of that problem, and due to that, the production increases, and with the production, the GDP, production of goods and services, the GDP also increases as well. This circumstances leads to increase in land productivity and surplus production of subsequently it boosts the economic growth. Government from this a government also able to collect more taxes revenue, and which can be uh, used to invest in public goods such as public health care and environmental projects. A, pro, a growing population also increases the labor force, providing more human capital, which is the key important of economic growth. If there are more people, that the if there will be more people, the probability of having genius peoples will also increase, like Aryabhat, Chanakya, and Swami Vivekanand and Dr. APJ Abdul Kalam, etc. These people exceptionally leads to technological and cultural masterpieces that which enriches our life. Large population often creates a diverse range of need and challenges that requires innovation, and subsequently leads to catalyze in inventions. At last, I want to conclude my views with attending your focus on the human development resources, which is organization plan, which helps to improve the skills, uh, basic skills of a human by investing on the health and education providing to the human, which overall develops the human personality and subsequently helps to increase in GDP and boost in economic growth. Thank you. Thank you, Yunita. Now I'd like to call up Divya. Good evening, everybody. I am the West Rani, and I am going to talk about the topic population explosion, and I will be speaking in against of that. So, to understand the effect of population growth, we should we should understand it in every aspect, be it our environment, our resources, or the overall quality of life. So, to make it easier for us to understand, I would like to break it in points. So, firstly, the labor force. Labor force being a positive side, but also there is a negative side. So, as the population is increasing, the labor is also increasing. The labor force increases, but the problem arises when the labor grows faster than the uh, job opportunities, which will lead to the unemployment and underemployment.
and automatically which will create the economic instability and social instability. Secondly, I would like to talk about the climate changes. Climate changes is one of the direct impact on economy. As the summer are being hotter and the heat waves are increasing, uh, it is very difficult for everybody to work. Speaking about the construction sector or the farmers in the agriculture sector, for them working in the summers become almost impossible, which leads to reduce in their potential of working, and the reduction in potential will automatically create a loss, and it is expected that this would create a loss of about $250 billion up to 2030, which is approximately 4.5 percentage of the GDP. Not even that, but also a study says that with the increase in 1 degree temperature of the global temperature, overall global temperature, increasing by the 1 degree is affecting our India's GDP by 3%. So I think that everything and the direct cause of the uh, decline in economy is the growing population. Thank you. Thank you, Devya. Next in list is Tejnoor. Hello, my dear friends. My name is Tejnur Singh. I am here in favor of this topic. I would like to conclude with few real time data which prove that population boost is actually helping in economic growth. My fellow team members said it helps to growth of the GDP and GDP per capita. I may be I may be how I may be show how in a study of India in 1960 GDP per capita was 83 dollars, and annual growth rate of 3.53% in 2017. This chart shows growth up to 14.22% GDP per capita up to $1,958. The export rate have also grown up and according to study of Standard Chart of India, export ratio is 7.5%, and on average of 2030, which would be is 777 billion dollars every. Even today, India being the most populated country, it doesn't stop. It doesn't stop. It Tejnoor, we're not able to hear you. Sorry, Tejnoor, I am visible. I am yes, you're audible. visible. Sorry, network issue. It even today, India being in the most populated country, it does stop it from beginning the 46th in global, including 2021 number fifth in GDP growth rate, and export rate is seventh rank. Thank you and have a nice day. So now anyone can ask questions to any other participant.
Okay, so Shreya is first. Shreya, you can ask your question. I would like to ask my question to Divya. She said that climate change is because of population explosion. Can you explain me how is population change affecting the climate? Yeah, as Because people I don't want see a to, link between the population explosion and climate. there is definitely a link. As we all know, that deforestation is the biggest reason. And other than that, as people need Can I more say of, you that there is more afforestation now than deforestation because of Forest Protection Act? The forest it is, protection but are doing the results shows that, and it's not because of population the climate is changing. There are other factors that is affecting it, so you can't conclude that the climate is changing because of population change. can you tell me what are the other factors that are affecting other than population? I would like to say that it is it is because of global warming. It is because of um, So I think that the global warming is caused because of human things, like the things that human do, such as CFC and all the other greenhouse then are you gases, saying are that it because is because of human the use that. population? It is because of the population explosion. Normally, a human won't use if let's see a scenario. If we do not have a population explosion now, we do not have a population of 8 billion people. We have the technology of ACs, cars. Then we won't have global warming because of overuse and overuse of things like this. Is it just because of Obviously, when population explosion? because of overpopulation, the resources are used more, and if the population is limited, then the resources would be in the absorptive capacity. So then there is no issue such that, because at the time earlier if we see, तो पहले भी लोग रहते थे और तब के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था ना, the ACs and all we didn't have, but तब then तो also people टेक्नोलॉजी थी ना, survived. तब टेक्नोलॉजी थी क्या? टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी है, बट उसके बाद भी, टेक्नोलॉजी होने के बाद उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? टेक्नोलॉजी है लेकिन इन्वायरमेंट पर तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है. इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो फिर तुम बोलोगे कि टेक्नोलॉजी हम लोग ग्रोथ ना करें. We should ग्रो stay करो. we should stay to the 90s and 80s where technology was null. 70s. Technology is a good thing, but overpopulation is more use of technology. As in, अगर कुछ एक मतलब अगर कुछ कम परसेंटेज के लोग होंगे तो वो जितना यूज करेंगे टेक्नोलॉजी को, अगर ओवर पॉपुलेशन है तो उससे ज्यादा यूज होगी टेक्नोलॉजी और उसकी वजह से इन्वायरमेंट ज्यादा इफेक्ट होगा. देखो अभी जो हमारा पॉपुलेशन में अगर हम डिस्कस करें तो मोर पीपल आर अंडर द पॉवर्टी लाइन हु कांट अफोर्ड लाइक अ मिनिमम ऑफ एसी. तो सबके पास एसी फ्रिज नहीं होते हैं. तो आप कैसे बोल रहे हो कि हर चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वजह से ही हो रहा है? Then tell me why are so many people below the poverty line? Let me tell you, because there is no proper guidance of working sector. अगर हम लोग थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो अब हम लोग जैसे डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग डेवलप करते करते हम लोगों का वर्किंग कैपिटल अभी बढ़ रहा है. अभी जैसे सेल्फ रिलायंस हो रहा है, सब सेल्फ अपना सेल्फ बिजनेस खोल रहे हैं. अभी बढ़ गया है फ्रॉम 2018 से अभी 2022 बट तक. ये चीज जो सेल्फ अपना लोग बिजनेस खोल रहे हैं, जो सब कुछ सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं, बट ये सारी जो अवेयरनेस है ये तो लोअर पॉपुलेशन तक नहीं अवेयरनेस पहुंच पा रही. अवेयरनेस
हु इज सेइंग नहीं पहुंच पा रही? गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी सारी है। आप गवर्नमेंट में जैसे अभी स्कीम्स है। अगर गवर्नमेंट की स्कीम सारा कुछ अवेयर करवा पा रही है तो फिर भी इतनी पॉपुलेशन तो नहीं हो सकती, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉपुलेशन, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. See, they are using the initiative, श्रेया, but कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? yeah, please. श्रेया देखिए, अगर हमारे पास डेवलपमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि अगर धरती नहीं अच्छा, रहेगी तो तुम फिर कह हम रहे हो कि डेवलपमेंट का क्या करेंगे? डेवलपमेंट और सुनो सुनो हमारे सुनो, जैसा कंट्री को कि आपने डेवलप नहीं होना है, हमारे एक कंट्री को मिनट डेवलप नहीं श्रेया होना है, बात श्रेया हमारा एक मिनट सुन जीडीपी लो पहले, हम लोग अंडर डेवलप्ड रहे। एक मिनट श्रेया सुन लो पहले बात। जैसे हाँ, जनसंख्या बोलो। जितनी ज्यादा बढ़ती है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज की जो खपत होती है ज्यादा बढ़ती है, ठीक है? तो हमारे कंट्री के पास लैंडमार्क काफी शॉर्टेज है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी हमें उतने गुड्स को बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसे तो हमारे कंट्री की जो मनी जो है वो तो अदर कंट्री में जाएगी, तो इससे देखो, हमारा जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस इसका नहीं मुझे होगा। आंसर देना है तुम्हें। लैंडमार्क का जो तुम बोल रहे हो, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अभी सेंसस नहीं निकला है, बट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक और समथिंग, इट इज सेइंग दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड। तो तुम बोल रहे हो कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गया है, हम लोगों का लैंडमार्क यूज हो गया है। वी आर द मोस्ट नहीं 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 नहीं, पॉपुलेटेड। तो यार वी आर द हमारे मोस्ट। पास लैंडमार्क सेम है, हमारे पास हाँ, रिसोर्स भी सेम है। बट फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल पहले हमारे पास पॉपुलेशन कम थी और हमारे पास रिसोर्सेज पर्याप्त थे। बट अब हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने ही है, बट हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम जितने बना नहीं पा रहे कोई भी सामान को उतने यूज करते हैं। तो फिर हमारे गवर्नमेंट को जो है सो हमें गुड्स सप्लाई करने के लिए उन्हें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो इससे जो हमारे कंट्री के जो करेंसी है वो विदेशों में जाते हैं। तो आप फिर कैसे कह सकते हो कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी डेवलपमेंट होती है? देखो, ठीक है, टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ने है, से बट हमारा टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रहा है, तो न्यू तरीके से चीजों। देखो, तुम अगर ये जो यूनिता ने बोला था कि नाइजीरिया में जैसे लैंड खत्म हो गया था, वो लोग क्या कर रहे थे? पुराना स्लैश एंड बर्न यूज कर रहे थे। तो उन लोगों का स्लैश एंड बर्न के वजह से लैंड तो खत्म हुआ ना, उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा था। तो नया टेक्नोलॉजी आया, बिकॉज एग्रीकल्चर उन्हें तो करना था, खाना तो है। तो तुम बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मतलब मैं बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ सोल्यूशन भी बनेगा ना। तुम श्रेया वन मोर थिंग, लैंडमार्क हर चीज नहीं होता ड्यू टू पॉपुलेशन। यू नहीं हैव श्रेया टू वन सी मोर थिंग दैट। सुनो पहले। हाँ। अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया से क्या ज्यादा है? नहीं है। नहीं है, बट फिर भी नहीं। वो ज्यादा ग्रोथ क्यों करती है? क्योंकि देखो, वो अमेरिका अदर का भी कंट्री की मैं जो टेक्नीशियंस है। अमेरिका का भी मैं एग्जांपल देती हूँ, उसका भी ग्रोथ मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ इंडेक्स से 13% ज्यादा। आई कांट से द एग्जैक्ट रेशियो, पर उसका भी रिपोर्ट आया था, मैंने अभी देखा है दैट दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, उनका पॉपुलेशन नॉर्मल एक पॉपुलेटेड सिटी से ज्यादा बढ़ रहा है, पर फिर भी वो लोग ग्रो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज नहीं बट उनके पास आप टेक्नोलॉजी ये है, बताओ ना। बिकॉज उनके पास रिसोर्स है हेल्प करने का, ह्यूमन रिसोर्स विच इज हेल्पिंग देम। ह्यूमन नो नो रिसोर्स नो नहीं नो नो, होगा तो उनके तुम्हारा पास कुछ भी। हाँ, और एक बोलो। मिनट, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है नहीं, वो हमारे और आपके कंट्री से लेके जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर डेवलपमेंट करनी है तो हमारे जो अच्छे जो पढ़े लिखे एम्प्लॉयमेंट जो व्यक्ति है उन्हें हमें अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि हमारे कंट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ही इतने ज्यादा है ना कि हम उन्हें खिलाने पिलाने और उनके हेल्थ पे ध्यान देने में अपने सारे पैसे खर्च कर लेते हैं। बट अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, तो उनके पास जो इनकम आती है वो सारे के सारे अपने डेवलपमेंट पे लगाते हैं, जबकि हम अपनी पॉपुलेशन से ही नहीं बाहर निकल पाते ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो, पॉपुलेशन ज्यादा होने पॉपुलेशन से की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डेवलप के होती है। लिए, पॉपुलेशन के, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है। पॉपुलेशन इज नथिंग। पॉपुलेशन चाइना की भी ज्यादा थी, पर वो डेवलप हो गया। इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट।
होनी चाहिए कि वो गाइड करे लोगों को। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो तो हम लोग भी ग्रो कर सकते हैं मोर देन चाइना, बिकॉज वी हैव द ह्यूमन कैपिटल, वी हैव द ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास लेबर ज्यादा है, हमारे पास फूड की एग्रीकल्चर में रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तो क्या आपको ये पता होगा कि अभी चाइना ने हाल ही में वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट लगाए हैं? तो फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो फिर वहाँ की सरकार ने पॉपुलेशन पे रोक क्यों लगा रही है? पॉपुलेशन पे रोक लगाई थी, अभी लगा Shreya, नहीं you're रही है not उसको। visible. जी नहीं, अभी भी लगी I'm है, आप sorry, चेक कर अगर सकते लाइट हो गूगल चला पे। गया है, then I'm like it's literally dark सॉरी टू over से here. श्रेया, बट आप अभी Sovik भी and जाके चेक Unita. कर सकते हो। पहले जो रूल्स थे ना उसमें कुछ उन्हें छूट दी गई है, बट वहाँ कंट्रोल अभी भी चल रही है। कंट्रोल अभी भी चल रही है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि ड्यू टू पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं? नहीं नहीं डेवलप नहीं, तो वो हुए आपने ही थे आपने ना जो जब बोला, पॉपुलेशन ज्यादा थी उनकी। आपने जो बोला कि पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो आप ये बताओ कि 1 लाख इंसान से कोई एक ही टेक्नीशियन निकल पाता है एज मेरे वाई, ख्याल से। तो वही तो मेरा क्वेश्चन भी है कि वाई, वन बिकॉज वेट ऑफ वेट वेट, पहले लैक सुन लो ऑफ आप, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। पहले सुन लो आप फिर बोलना। तो 1 लाख व्यक्ति से अगर कोई एक निकलता भी है तो फिर उसकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है जो कि हमारी जीडीपी को निर्धारित करती है, तो फिर वो इतना अर्न नहीं कर पाता ना कि वो हमारे बाकी के बच्चे लोगों को खिला सके। बट वही दूसरी कंट्री है, वो अपने ट्रेजरी के हिसाब से लोगों को ज्यादातर पैसे देकर और हमारे टेक्नीशियंस को वो वहां ले जाते हैं। इनके लिए उनकी डेवलपमेंट बढ़ती है। और जहां तक आपने चाइना की बात कही, तो चाइना के पास लैंडमार्क भी है, प्लस वहाँ की जो सरकार है वहाँ के लेबर को ज्यादा छूट नहीं देती है जहाँ की आपके पास है। वहाँ अगर कोई भी ये जो कंपनी ओपन होती है तो वहाँ की सरकार ने उन्हें पूरी छूट दे रखी है। अगर वो चाहे कि हमें एक पेंटर चाहिए तो उन्हें एक स्किल्ड पेंटर मिलता है। और वो Guys, कंपनी I have अगर a चाहे तो request. उन्हें 8 के जगह 12 घंटे काम ले सकती है, वहाँ की सरकार कुछ नहीं कहती। बट हमारे यहाँ इक्वलिटी है, जिस कारण से यहाँ वो डेवलपमेंट नहीं है। लिसन उत्सव, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इक्वालिटी Shreya, जो एक तुम, second, I have a request. या सोविक एंड यूनिता ने भी अपना हैंड रेज किया है, तो I'd हाँ like या to give them a chance to express their thoughts. I have a question to या Unita. Yes, please, Souvik. You says that Indian population is growing with working population. So why max of the Indian population is jobless? Oh, it's due to the you can't say that maximum of Indian peoples are jobless or unemployed. Some of, but you What is can't maximum? conclude. You can No. you can see I the would ratio. like, sorry, can I answer that question? हाँ sure. Listen, not many. See, there is unemployment, sure, but अभी का कंपैरिजन करो और आगे का कंपैरिजन करो, क्या जॉब रेशियो बढ़ा है? जॉब का मतलब जॉब रेशियो बढ़ा है कि नहीं? आगे जो लोग काम करते थे, अभी सर्विस सेक्टर में लोग, आईटी सेक्टर में लोगों को काम मिला है कि नहीं? मैं I ये want पूछना to चाहती add हूँ। one Sorry, more this is thing. invalid. Souvik, Guys, I we're on a want time to crunch. Guys, we're on a time crunch. So Unita, तुम अपना question बोलो. I want to first answer to the Souvik. That Souvik, I want to Yes add sir. one more thing. That as I mentioned in my speech, that we need to invest on human resources. If we invest in that, so obviously the health and the education, two mandatory aspects of the development. If a human or a population is healthy of our country, so obviously it will work to its fullest of capacity. And if population have proper literacy rate, it will, if the population is educated,
So definitely, it will going to earn. It will going to had some job. It will earn, and if there will be no job, then the population will create own. Then the population will be self-employed. It will create some alternatives to earn money from by themselves only. The population will be not no more unemployed or jobless. That's what I want to say. Okay, thank you, Yunita. We're on a time crunch, so I'll have to conclude this here. In conclusion, the debate on population explosion is multi-faced and nuanced, encompassing various perspectives and viewpoints. The rapid increase in human population had sparked discussions about its potential impacts on the environment, resources, and economies. Both potent and critics of the population growth bring, for, bring forth valid arguments that highlight different aspects of complex issue. Ultimately, the debate on population explosion underscores the need for comprehensive policies, international cooperation, and innovation solutions that consider the well-being of both present and future generations while respecting individual rights of the planet's limited resources. So now I'd like to request our beloved teachers to come up and give us the results. Rachna ma'am and Kinesh sir, can you please join? Hi, so can everyone hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So fantastic, fabulous, kudos. My congratulations to all of you. Extremely well anchored, Ritu. You are a fabulous host. And all my Thank participants, you. I'm so proud of you. I've actually saved this link and I'm going to share this link with all my co-educators and everyone across the platform कि भाई ऐसे भी हो सकता है वर्चुअली भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो इवन ऑफलाइन नहीं करने को मिलता स्टूडेंट्स को सो वंडरफुल अब ऐसे है कि नाउ कम्स द टाइम वेयर हैव टू अनाउंस द विनर्स राइट और विनर्स के लिए हमने कुछ पॉइंट्स रखे थे बेसिकली this was a great start. I'm impressed with how all of you have carried out your research and you have collected your facts and how you have presented yourself on the screen despite so many constraints. Utsav comes from a region where for him it is very difficult to be present, to connect the camera, and there is a frequent network drop also at his place. For Shreya also, I think there was some disruption, but still you all managed this very well. So accept my congratulations everyone. लेकिन हाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स स्पीच डिलीवरी इसके अलावा आपका जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं टू कीप योर स्पिरिट्स लाइट टू बी रेस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम टू कॉन्ट्रोडिक्ट द व्यूज एंड ऑल्सो सी क्लैरिटी ऑन अदर्स व्यूज इज व्हाट विल हेल्प मी टू डिसाइड द विनर्स कोई विनर्स नहीं है यहाँ पे तुम सबका बहुत अच्छा था लेकिन हाँ आगे जा करके जैसे ग्रुप डिस्कशंस होंगे जैसे आप सबको प्रेजेंट करना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ेगा एंड स्टिल यू विल हैव टू प्रूव योर पॉइंट है ना क्योंकि डिबेट में तो फॉर और अगेंस्ट होता ही है सो आई थिंक यहाँ पर अगर दो चूज करने पड़े भाई फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर बोलो कि टू पीपल who did absolutely well who did justice to the topic they chose to speak for or against I think सबसे पहले जाता है मेरा वोट श्रेया को I think Shreya was Thank at you. point and she had all the valid information she had collected she had researched her information very well क्योंकि बहुत difficult होता है यहाँ पर against में बोलना we all know that India is a populous country we all know how population is impacting our growth at the same time we all know that the head count is the task force right so talking about all these things and putting them into a concrete idea is wonderful Shreya well done Thank you, ma'am.
जब बात आती है यहाँ पर व्यूज को क्रॉस करने की, आइडियाज को प्रेजेंट करने की, एट द सेम टाइम क्रॉस क्वेश्चंस करने की, वहां पर आपको चाहिए, आई थिंक आपको चाहिए कन्विक्शन, आपको चाहिए प्रॉपर डिक्शन, एट द सेम टाइम यू शुड बी वेल रिसर्च्ड। ऐसे फैक्ट्स जहां आपने पूरी रिसर्च की है, आप पढ़ कर आए हैं और आप तवज्जो दे रहे हैं हर उस पॉइंट को, आप ध्यान से सुन भी रहे हैं ना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अ गुड लिसनर। बिना लिसन किए तो आप क्वेश्चंस ना पूछ पाएंगे, ना आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना आप उसको जो है समझ पाएंगे। सो वहां पर मेरा नेक्स्ट, टेल मी इफ यू ऑल अग्री विद मी, नेक्स्ट जो वर्ड चाहता है वो चाहता है उत्सव को। यस, उत्सव वाज अगेन वेल रिसर्च्ड, उसने काफी सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए थे और जब श्रेया को वो क्रॉस कर रहा था, ही वाज कॉन्फिडेंट एंड ही हैड ऑल द वैलिड पॉइंट्स टू क्रॉस श्रेया। I personally quite liked how Souvik delivered his speech. You were thorough, you were great. लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब क्वेश्चंस चल रहे थे तो सौविक took a back foot कि यार मैं थोड़ा चुप रहूंगा. So that certainly can be improved. That can be worked upon. You were very good. Tejnoor, you started very well. लेकिन वो स्टार्ट होने के बाद थोड़ी सी और रिसर्च और आई थिंक आपने ये सोचा कि चलो छोड़ देता हूँ मैं, मतलब इतनी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है. So that is one point where you can do some work. Unita, you were wonderful. लेकिन जब हम लोग यहाँ से डिबेट देख रहे थे बाहर से, तो थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे यूनिता को थोड़ा सा डोमिनेट कर लिया. यूनिता के जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे व्यूज, जो अपोनेंट्स थे, उन्होंने शायद थोड़ा सा आपको ऐसा लगा जैसे बैकफुट पे डाल दिया. सो यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट. Your research and your delivery was fantastic. I quite liked it personally. And Ritu, Divya, you were wonderful, my child. I'm impressed with how courageous you were, and putting up your points. Even though everyone at one point everyone was against Divya, and everyone was questioning her, but she was not intimidated by that, and that is the most important part in a presentation, in a debate, that you're not intimidated. You should know that, okay, this is only a discussion, and back of the class we all are friends, right? So excellent, good going. We will have these sessions more often. Ritu, congratulations, you were a fabulous host, well coordinated. Anshika, I think without your help, Ritu would have certainly not done justice to her role here as an anchor. So two of our activity monitors, Anshika and Ritu, kudos to both of you. These 2 weeks, this fortnight, was valuable and precious to all of us. And we have learned a lot. So great going, guys. And we look forward to more of these sessions. Keep it up and take care. Your prizes, your chocolates can be collected in the group from me. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Done everyone. सबने बहुत अच्छा किया. Well done. Thank you. Congrats as well. Congrats, Ritu, guys. well done. Okay, bye guys. Bye bye. Bye.